मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. જંગ બોલઈ વ્યવહાર નવો દંસણું નાનું ચરિતું જંગ પર્યાણ હી પરમાત્મા પ્રકાશ. 14મી ગાથા ચાલે છે ને? હા, 14. यहाँ प्रश्न आयो है, देखो. शीश ने प्रश्न किया, थोड़ा आयु है. यहाँ शीश ने प्रश्न किया, प्रभु निश्चय मोक्ष मार्ग तो निश्चय रत्न त्रय तो निर्विकल्प है. जय पंडित जी. और व्यवहार रत्न से विकल्प सहित है. आ प्रश्न है. શું કે છે કે નિશ્ચય રત્નત્રય તો અંદર નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટિ જ્ઞાન ને ચારિત્ર છે અને વ્યવહાર રત્નત્રય તો વિકલ્પ રાગ છે. તો રાગ તે નિર્વિકલ્પતાનું કારણ કેમ થાય? આમ પ્રશ્ન છે. સમજાય છે કાંઈ? વસ્તુ ભૂતાર જે ત્રિકાળ છે એને આશ્રય નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટિ આદિ પ્રગટે છે કે વ્યવહારને આશ્રય પ્રગટતી નથી. તો વ્યવહાર તો વિકલ્પ છે, એને તમે સાધન કેમ કહ્યું? સમજાય છે કાંઈ? નિશ્ચયને સાજ કહ્યું ને આને સાધન કેમ કહ્યું? વિકલ્પ છે ને. એનો ઉત્તર इस कारण उसको साधक मत कहो, जिसका प्रश्न है. इसका समाधान ये આજે હવે લખાણ છે એ થોડું ટીકાકારનું નથી, એ 1.5 ગ્રામનું છે. આટલું લખાણ કેટલું कि जे अनादिकाल का यह जी विषय कषायों से मलिन हो रहा है ये टीकाकारનું નથી, 1.5 ગ્રામનું છે. टीकाकार ब्रह्मदेवનું નથી, नहीं है. टीका में नहीं है. नहीं, टीका में तो सब परंपरा मोक्ष कारण व्यवहार ત્યાં ખબર છે પણ जरी खुलासा थोड़ा किया कि अनादिकाल जीव विषय कषाय से मलिन हो रहा है, व्यवहार साधन के बिना उज्जवल नहीं. अर्थात मिथ्यात अवरोध कषायादि क्षीण कहीं मंद न हो.
कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की श्रद्धा हो ने उसकी मंदता उसकी श्रद्धा न हो, ऐसी क्षणता न हो तो अध्यात्म की बात सुनकर अधिकारी नहीं होगा। ये तो बात कुगुरु कुदेव कुशास्त्र उसकी श्रद्धा ने तीव्र विषय कषाय नो प्रेम एमा जो मंदता न हो तो ये अध्यात्म की बात सुनवाने लायक पण छे नहीं। समझाई शकाय? श्रीमदे कहू त्याग वैराग न चित्तમાં આ કહ્યું છે કુગુરુ કુદેવ કુશાસ્ત્રો એની શ્રદ્ધા તો છૂટવી જોઈએ અને વિષય કશાયનો તીવ્ર રુચિ પ્રેમ એ તો એને છૂટવું જોઈએ તો આ અધ્યાત્મની વાત સાંભળી શકશે। સમજાઈ શકાય? છતાં એનાથી પમાય નહીં એમ નહીં। त्याग वैराग न चित्तમાં થાય ન તેને જ્ઞાન અટકે त्याग वैराग में पासे रागनी मंदता में जो अटकी गयो तो अंतर सोनो आश्रय नहीं ली सके। समझाई शकाय? આવી बात है। उज्ज्वल नहीं हो सकता। जब मिथ्यात्वव्रत कषाय क्षण देवगुरु धर्म की श्रद्धा करे तत्वों का जानपना होवे ये तो सम्यक दर्शन पाने पहला की बात करते हैं। पाठ में तो सम्यक निश्चय है जहाँ व्यवहार के साथ है ये बताना है। तत्वों का जानपना में अशुभ क्रिया मिट जाए तब गुरु व अध्यात्म का जाकर हो सकता है। जैसे मलिन कपड़ा धोने से रंगने योग होता है बिना धोए नहीं। ये पंडित जी दौलतराम जी का ये खुलासा है। अब टीकाकार का खुलासा में आएगा कि सविकल्प दिशा निर्विकल्प दिशा है निश्चय आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों कहने में तो छठा गुण उसका नहीं बात लिया है। टीकाकार ने पाठे छठे गुण स्थान में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है पण जी विकल्प है व्यवहार है तो उसको छोड़कर निर्विकल्प दिशा सप्तम गुण स्थान होता है। ये बात कहना है। पर बात आ कही परंपरा मुख्य का कारण व्यवहार रत्न कहा ये टीकाकार का खुलासा है। क्या कहते हैं? શું કહે છે કે આત્મા નિશ્ચયથી પામતે હે તો अपना આશ્રયથી જ પામે છે। ભૂતાર્થ ને આશ્રય સમ્યક દર્શન હોતા है। ये तो મહા સિદ્ધાંત તેનો કાલ ભૂયત્તમ સિદ્ધો ખલુ સમાયેઠી હવઈ જેવું શાશ્વત વસ્તુ નિત્ય ધ્રુવ વસ્તુ દ્રવ્ય વસ્તુ એનો આશ્રય સમ્યક દર્શન થાય છે। આ તો ત્રિકાળી નિયમ ને ત્રિકાળી સિદ્ધાંત પણ यहाँ व्यवहार बीच में आता है ये बताते हैं। अथवा निश्चय सम्यक दर्शन पीछे पण राग की मनता का व्यवहार आता है नहीं निमित्त ये निमित्त का ज्ञान कराते हैं। व्यवहार कहे इसका सत्यार्थ माने तो श्रद्धा विपरीत है। ये आया है ना टोटल मन निश्चय कहे ये सत्यार्थ है और उसकी श्रद्धा करे सम्यक है। व्यवहार कहे उसकी श्रद्धा करे तो मिथ्यात है। समझ में आया? व्यवहार आता है और पहले विकल्प कहा ये नैगम नहीं से कहने में आया है। वो कहते हैं देखो तो मोक्ष कारण मोक्ष का मार्ग ये नैगन नहीं से कहा है भूत नैगन में से अर्थात जैम वो आता है ना क्यों निशंक अंजलि चोर अंजन चोर की निशंकता पहले है ने उसको व्यवहार करके निश्चय पाना है
तो पामेला वाला की पूर्व दिशा क्या था वो बताता है। मोक्ष मार्ग में बना है कि भाई निश्चय तो अंजन चोर तो अपना स्वभाव के आश्रय पामे तब है, पर पूर्व को उसका एक व्यवहार ने व्यवहार का पण एक अंग, निशंक तो एक अंग है, ये व्यवहार का अंग है, उसको संकित कहा। ये तो पामेल है, निश्चय उसका आरोप करके उसको व्यवहार कहने में आया है। समझाई से खाए માં ગડબડ મોટી આમાં છે હે અટપટું માણસ વ્યવહારની પ્રેમ છે ને એ અનાદિનો પ્રેમ છે ત્યાં અટક્યો છે। વસ્તુ છે એ તો નિરપેક્ષ છે, અંતર સ્વભાવને આશ્રય પામે એમાં કોઈ પરની અપેક્ષા છે નહીં, પણ નૈગમ નહીં છે એવું કહેવામાં આવે કે પૂર્વે વિકલ્પ હતો એ અત્યારે ટાળીને નિર્વિકલ્પ થયો, એથી નૈગમ નહીથી વ્યવહારે પરંપરા કારણ કહેવામાં આવ્યું। પણ એ પામે એને છોડે નહીં કીધું ને, પામે એને એ કહ્યું છે। જેની વાત છે થોડી બહુ ગડબડ હાલી છે ને આમાં ગડબડ નહીં લોકો। વાત એ કે નિશ્ચય સમ્યક દર્શન પામ્યા बिना तो व्यवहार कहने में आता ही नहीं। पहले तो ये सिद्धांत, निश्चय सम्यक बिना व्यवहार का तो मूंड व्यवहार मूंड कहने में आया है। 437 का था व्यवहार मूंड है तो, पर जब निश्चय हुआ तब राग की मंत्रता देवगुरु साक्षात आदि आता है, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग का आरोप करके कहा है नहीं। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है नहीं, ये तो निरूपण कथन में दो प्रकार आया, वस्तु तरीके दो नहीं। समझ में आया એની વાત है। ये यहाँ परंपरा मोक्ष का व्यवहार था और विकल्प पूर्व विकल्प था ने शुभ राग यहाँ पायमो એટલી કહ્યું બસ એ વાત અભાવ કર્યો અને પાયમો ત્યારે પૂર્વના કારણે નિયમ નહીં વ્યવહાર કર્યો। તારો સમજી એસી વાત है। ये અંજન ચોર પણ નિશ્ચય સમ્યક પાયમો જ્યારે એને પૂર્વના નિશંક અંગને उसका कारण कहा। मोक्ष मार्ग खुलासा है मोक्ष मार्ग कि भाई निश्चय तो व्यवहार का निमित्त અને व्यवहार का भी निशंक तो एक अंश है, एक अंग है, व्यवहार पूरा नहीं है। ये निशंकता को निश्चय संकित का कारण कहा, वो तो पाना है, उसका पूर्व का आरोप करके कहने में आया। तो समझाई છે કાંઈ? હવે અહીંયા ફેરી मोक्ष का मार्ग दो प्रकार का है, एक व्यवहार दूसरा निश्चय। निश्चय तो साक्षात मोक्ष मार्ग है, स्वाश्रय तो साक्षात मोक्ष मार्ग है, निश्चय तो स्वाश्रय। वस्तु स्वभाव पूर्णानंद प्रभु विज्ञान घन उसका आश्रय से मोक्ष हो तो निश्चय यथार्थ है। અને पराश्रय जो व्यवहार है वो तो परंपरा आरोप देकर कहने में आया है, खरी खरी कारण है नहीं। वो कहते देखो व्यवहार अथवा व्यवहार परंपरा एम कहो ने, परंपरा નો अर्थ આ कि विकल्प छोड़कर निर्विकल्प होगा। विशेष हो पहले तो है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान तो है, उसमें व्यवहार विकल्प आया। ये निश्चय मोक्ष मार्ग साक्षात मोक्ष का कारण है। विकल्प परंपरा क्योंकि वो छोड़कर पूर्ण होगा, वो कारण उसको परंपरा कहने में आया है। छोड़ी नहीं व्यवहार तो राग है, व्यवहार करता राग करता था, राग करता व्यवहार में निश्चय वितराग था।
કે રાગને છોડે ત્યારે વિતાય ભાઈ. એ તો કેવી 85 કે પરંપરા એટલે દેવના ક્લેશાદી ભોગ છે. 85 કહા है पीछे 172 गाथा. परंपरा कषाय में क्लेश भोग से ये परंपरा कहने में आया है. निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान तो है, पर व्यवहार आया उसको परंपरा क्या. परंपरा का अर्थ ऐसा लिया देव आदि में क्लेश भोगेगा. देव आदि नाम यहाँ से पुण्य भाव है तो क्लेश होगा, जहाँ से मनुष्य होगा जी ત્યાં પણ दुख भोगेगा. एक क्लेश भोगवी ने परंपरा पची छोड़कर वितरण हुआ. समझ में आया. गड़बड़ मोटी आमा है. आ ચોખવટ તો કેટલી કરી, કાલે પણ ઘણી કરી. खरेखर तो रात्रि को कहा था, सवय करता रहा था कि आत्मा वस्तु तो वस्तु है, तो पूर्ण शुद्ध ध्रुव शाश्वत वस्तु. इस शाश्वत वस्तु ने आश्रय सत्य दर्शन એટલે નીચે સમકી, સત્ય જ્ઞાન એટલે નીચે જ્ઞાન, सत आचरण रमणता है निजी चारित्र. वो 3 बोल को भी व्यवहार कहा है. 16મી गाथा ने कलश में 16મી गाथा में ये दंसणना चरिताणी शिवयवाणी सौना निचम ताणी पुणजान चीणीवी अपाणं चेव निश्चय दो. आ 16મી गाथा. निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय चारित्र ये पर्याय છે. એને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાની સેવીય વાણી શ્રાવણની જેમ સાધુએ 3ને સેવના કરવી ये व्यवहार है. पर्याय नैसे कथन करने में आया है, क्योंकि लोगों को पर्याय नैसे समझते हैं. वो कारण उसका खुलासा है क्या 16મી गाथा नीचे. समझ में आया. दंसणना चरिताणी सेवीयवाणी साहुना निचम नित्य ते 3 पर्याय निश्चय ने सेवना करनी. ताणी पुणजान तीनवी अपान से नीचे हो. 3 छोड़कर एक तो आत्मा जी का वो नीचे है. भाई समझ में आया. ये 3 भेद को भी શું કહ્યું હે મેચક મેચક કયા. मेचक कहा, मलिन कहा, अशुद्धता कही. 3 बोले. जरी आत्मा वस्तु है, वस्तु छे अनादि अनंत शाश्वत पदार्थ. ज्ञान कंद, आनंद कंद, ईश्वरता कंद, पूर्णानंद. ये वस्तु के आश्रय से निश्चय सच दर्शन, सत ज्ञान, सच्चारित होता है. पर वो 3 है, ये पर्याय नहीं से कहने में आया है. ये तत्वार सूत्र में कहा है कहीं कि तत्वा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग. ये पर्याय नहीं से कथन है. ये तत्वार सूत्र जी दर्श लक्षणी पर्व में कायम पर्यूषण में कायम मानते हैं, पर वो भी पर्याय ने क्या कथन है निश्चय सम्यक निश्चय ज्ञान नहीं. जब 3 भेद आया ने तो ये पर्याय ने क्या कथन है. ये कल कहा था नहीं, 242 का था प्रवचन साहब बताया था. उसमें क्या आप दर्शन ज्ञान चारित्र 3 पर्याय है. ये पर्याय नहीं का व्यवहार नहीं कथन है. और 3 भेद को छोड़कर अकेला आत्मा में लीन होना ये निश्चय द्रव्य प्रधान कथन है. ये 242 का था प्रवचन सार. एनो टीका ने एनो कलश 2 में આવ્યું છે. કાલ બતાવ્યું છું. અહીંયા એ કહે છે કે एक व्यवहार, एक निश्चय व्यवहार. निश्चय तो साक्षात मोक्ष मार्ग, व्यवहार परंपरा.
अर्थात विकल्प छूटीने પછી થશે, માટે એને પરંપરા कहने में आया है। ये पर्याय नहीं का कथन है, है तो नहीं, व्यवहार कथन है निश्चय की पर्याय का, पर पर्याय 3 है उसका कथन है, માટે वो ये पर्याय नहीं का कथन है, पर है तो निश्चय ही। व्यवहार समझी नहीं, पर 3 भेद से कथन किया ने तो पर्याय नहीं का कथन है। ये आई कैसे जो अथवा सविकल्प निर्विकल्प के भेद से निश्चय मोक्ष मार्ग 2 भाग, निश्चय ना 2 भेद, निश्चय मोक्ष मार्ग का 2 भेद, उसमें खुलासा देखो। हाँ, टीका का खुलासा, जो मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूं, मैं अनंत ज्ञान स्वभाव છે એ અનંત છે, જેનો સ્વભાવ છે જ્ઞાન એ અપરંપાર અપાર સ્વભાવ છે, એ અનંત જ્ઞાન છું એવો જે વિકલ્પ ઉઠે છે એમ કહેते, ये व्यवहार कहने में आता, ये आश्रय है। मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, एक हूं, एक रूप से न टिकाओ, सोहम ते हूं, ऐसा चिंतन हो तो सविकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग। देखो सविकल्प है, राग है, पर स्व के आश्रय ना प्रश्न है ने, मैं अखंड हूं, अनंत हूं, ये अपेक्षा से निश्चय मोक्ष मार्ग को सविकल्प भेद कहा। ये सविकल्प आश्रय है, समझाई से कहा ये कैसे दो है? શું કે છે? ये तो છે એની વાત ને, આ તો વિકલ્પ उठते हैं, એને निश्चय मोक्ष मार्ग कहने में आता है। वो निश्चय तो है, निर्विकल्प है, आई तो निर्विकल्प को निश्चय मोक्ष मार्ग निश्चय, અને સવિકલ્પ को व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग, એને निश्चय કેવું છે। સ્વને આશ્રય ભેદ ઉઠ્યો છે ને, એ અપેક્ષા નીચે કેના है। એકલો સવિકલ્પ છે એમ નહીં, પણ એ નિશ્ચયમાં દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર તો છે। ये रसपूर्ण चिट्ठी में लिखा है, सविकल्प द्वारा निर्विकल्प नहीं, दर्शन में रसपूर्ण चिट्ठी में बहुत बड़ा खुलासा है। सविकल्प द्वारा निर्विकल्प अर्थात है तो करी दशा निश्चय की, पण विकल्प पहले करते हैं कि मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, एक हूं, ऐसा विकल्प के, तो विकल्प द्वारा निर्विकल्प ऐसा क्या कहा है? विकल्प द्वारा निर्विकल्प का अर्थ तो विकल्प छोड़कर निर्विकल्प होता है, तो विकल्प द्वारा कहने में आया। अरे सारा समझे, आगे बात से भाई, वह तो सविकल्प निश्चय मोक्ष, देखो उसको साधक कहते हैं। देख, मैं शुद्ध हूं, अखंड, ये तो अपने नई में આવી ગયું 142 કે હું શુદ્ધ છું, અભેદ છું, એક છું, પરિપૂર્ણ છું, એવો જે વિકલ્પ નિશ્ચય નયનો પક્ષ છે, નિશ્ચય નયના જ્ઞાનના અંશનો એક ભાગમાં અટકવો પક્ષ છે। समझ में आया? व्यवहार थी बंद है, अनेक है, ये व्यवहार को तो हम छोड़ गौण करके कहने में आया है, व्यवहार को तो गौण करते कहने आया है, पर निश्चय में मैं शुद्ध हूं, बुझवा जो कही
મેં અનંત જ્ઞાન હું, શુદ્ધ હું, એક હું, સોહમ, એવો જે વિકલ્પ તે નિશ્ચય નહીંના વિકલ્પનો એ પક્ષ છે. હા 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 એને પણ છોડાયો છે. કેમ કે નિશ્ચય નહીંના પક્ષમાં પણ જે વિકલ્પ ઉઠ્યો છે એ રાગ છે, એ આશ્રવ છે, એ આકુલતા છે, દુઃખ છે. હા 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 એને અહીં સાધક કેવો એ પણ વ્યવહાર નહીં છે તો નિશ્ચય કેવું છે ને સમજાણું છે. उसको सविकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग और उसको साधक कहते हैं. ये विकल्प उठते हैं अंतर में, निश्चय नहीं नो पक्ष नो विकल्प. उसको साधक कहते हैं. ये पण साधक के आरोप से कथन है. साधक तो राग से भिन्न होकर प्रज्ञा ब्रह्म, प्रज्ञा क्षीणी से राग को छेद कर अंदर में एकाग्र हुआ, वो साधक. निश्चय तो साधक ही है. प्रज्ञा क्षीणी कहा ना, निश्चय साधक तो ये है, पण इस उसमें वो विकल्प आया, उसको व्यवहार साधक का आरोप किया, निश्चय ना उसमें आरोप किया. जेम निश्चय सम्यक दर्शन है, अपना आश्रय से अनुभव वेदन, उसके साथ देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प है तो राग, पर उसको संकित का आरोप करके संकित व्यवहार कहा. समझ में आया? एम यहाँ साधक में लेना. साधक दो प्रकार का है नहीं, जे मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं. मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार है, मार्ग एक ज है. एम साधक दो प्रकार का नहीं, साधक तो एक प्रकार का है. हाँ हाँ, साधक को मार्ग को બધું तो एक ही है. समझ में आया? આવું જણું છે. સારું કહ્યું ને. હા, મોક્ષ માર્ગ. હવે મોક્ષ માર્ગ તો કઈ બે નથી, પણ મોક્ષ માર્ગનું નિરૂપણ બે પ્રકારે છે. નિરૂપણ નામ કથન. એમ સાધક પણ બે પ્રકારે નથી, સાધકનું નિરૂપણ બે પ્રકારે છે. એમ લેના. હે, જ્યાં સાચા મોક્ષ માર્ગ ને મોક્ષ માર્ગ નિરૂપણ કર્યો તેઓ નિશ્ચય છે. જ્યાં મોક્ષ માર્ગ તો નથી, પરંતુ મોક્ષ માર્ગનું નિમિત્ત છે, એટલે સહચારી છે, સાથે છે રાગની મંદતા, દેવગુરુ શાસ્ત્ર શ્રદ્ધા આદિ. તેને ઉપચારથી મોક્ષ માર્ગ કઈ તે વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ છે. કારણ કે નિશ્ચય વ્યવહાર સર્વત્ર એ મૂળ લક્ષણ છે. નિશ્ચય વ્યવહારનું સર્વત્ર એ લક્ષણ છે. એમાં સાધકપણે પણ આ લક્ષણ લઈ લેવું. હા હા, વ્યવહાર સાધક કયો એ આરોપથી, અને નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગમાં વિકલ્પને સાધન કયો એ પણ આરોપથી. આવી વાત છે. અહીં તો ત્યાં સુધી લીધું છે કે સાચું નિરૂપણ તે નિશ્ચય છે ને, અને ઉપચાર નિરૂપણ વ્યવહાર છે. નિરૂપણની અપેક્ષા બે પ્રકારનો, પણ એક નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ ને એક વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ. શું પાછી ભાષા કેવી છે? એક નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ ને એક વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ. એમ નથી. એમ બે મોક્ષ માર્ગમાં મિથ્યા છે. એથી આ ટોડરમલ ને આ પંડિતોને નથી બેસતો તે એમ કે છે નહીં. બધા હર્ષિદાસ ને ટોડરમલ અધ્યાત્મની ભાંગ પીને નાચ્યા છે બધા લલિતપુર. એ ભગવાન, ટોડરમલ નહીં, એ તો વળી ભાઈ રતનચંદ કે છે. રતનજી કહે છે કે બે મોક્ષ માર્ગ ન માને એ બ્રહ્મ છે. આ કે છે બે મોક્ષ માર્ગ માને એ બ્રહ્મ છે. શું થાય? એ આત્મા છે, પણ એને એ જાતનું સ્વયં આશ્રય ન બે ત્યાંથી શું થાય? હા હા હા, અહીં તો ત્યાં સુધી કહેજો કે
એક વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ ને બે માનમાં મિથ્યા છે. નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ વ્યવહાર બંનેને ઉપાધિ માને તે પણ ભ્રમ છે. કેમ કે નિશ્ચય વ્યવહારનું સ્વરૂપ પરસ્પર વિરોધતા સહિત છે. ક્યોંકि શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે 11મી ગાથામાં, વ્યવહાર અભૂતાર્થ છે ને સત્સ્વરૂપને નિરૂપતો નથી. કોઈ અપેક્ષા ઉપચારથી અન્યથા નિરૂપે તે તો વ્યવહાર છે. કોઈ અપેક્ષાએ ઉપચારથી અન્યથા કહે છે તે વ્યવહાર છે. આવી વાત છે. વ્યવહાર સાધક કયો એ પણ નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવવા છે, તો અન્યથા બી દૂસરી વાત. यह स्वर्णपुरी अति पावन है. यह स्वर्णपुरी अति पावन